बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे इसमें मुबशर रियाज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Today we are going to solve the exercise of chapter number 15, which is electromagnetic induction. So in this exercise we will discuss some short questions as well as numerical problems. So first of all, here is the first short question. Does the induced EMF in a circuit depend on the resistance of the circuit? क्या EMF circuit की resistance पे depend करती है? And second part, does the induced current depend on the resistance of circuit? क्या induced current circuit की resistance पे depend करता है? तो इसमें ये दो parts हैं, जिसमें पहले हमें induced EMF और resistance के relation को discuss करना है. Second में हमें induced current और resistance of circuit को discuss करना है. So in first part, induced EMF does not depend upon the resistance of circuit, because according to Faraday's law, E is equal to minus N delta phi over delta T. Hence we can say that induced EMF is independent of the resistance of circuit, and it depends upon the rate of change of magnetic flux. It is independent of the resistance, यानी induced EMF का resistance के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. In second part, induced current depends upon the resistance, because induced current is equal to induced EMF over resistance of the circuit. So they are inversely proportional to each other. Hence induced current depends upon the resistance, whereas induced EMF does not depend upon the resistance of the circuit. In question number 2, there is a square loop of wire and it is moving through a uniform magnetic field. The normal to the loop is oriented parallel to the field lines. Is EMF induced in the loop? क्या EMF induced होगी? And give a reason for your answer. So according to statement, EMF will not induce in the square loop. तो इसकी रीजन क्या हो सकती है कि if a loop of wire is moving through a uniform magnetic field, then why EMF not induces in that loop of wire? So its reason is because the loop is moving in the magnetic field in such a way that it's normal to the loop, perpendicular to the loop or normal to the loop remains parallel in magnetic field. ये जो इसका normal है, यानी इसका perpendicular जो होगा loop of wire का, वो magnetic field के parallel रहता है. Like this. This is the plane, that loop of wire, and that loop of wire is held perpendicular to field lines, but its vector area is parallel to the field lines. So in this case, angle between B and A becomes equal to 0. यानी loop of wire तो field lines के perpendicular है. So if this loop of wire is moving parallel to the field lines in this way, then EMF will not induce, because there is no change in flux. यहाँ delta phi ही 0 होगा, क्योंकि constant lines pass हो रही है, तो flux में change नहीं आएगी. So if delta phi is equal to 0, then by using this mathematical form, we can say that induced EMF is also equal to 0. So with this orientation, no EMF will induce in that square loop of wire. Question number 3. There is a light metallic ring and it is released from above onto a vertical bar magnet. ये इस किस्म का एक vertical bar magnet है, जिसमें ये upper and north pole, lower and south pole को represent कर रहा है, जबकि यहाँ ये एक metallic ring है, और ये metallic ring को इस magnet के ऊपर drop किया जाता है. So viewed from above, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, then does current flow clockwise or anti-clockwise in the ring? तो क्या इस रिंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा या एंटी क्लॉकवाइज में इंड्यूस होगा? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि करंट इंड्यूस होने की रीजन क्या है. रीजन में आप ये बता सकते हैं कि व्हेन मेटालिक रिंग इज रिलीज्ड, जब आप इसको टॉप से रिलीज करेंगे, देन फ्लक्स थ्रू मेटालिक रिंग चेंजेस. फ्लक्स के चेंज होने की वजह क्या है? आप नोट कर सकते हैं कि नियर द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर and they are far apart from each other, जैसे जैसे आप मैग्नेट से अवे मूव करेंगे.
So when this ring is moving downward, the number of field lines passing through that metallic ring will increase, hence flux changes, and it causes an EMF induce in the metallic ring, जिसकी वजह से इस metallic ring में EMF induce होगी. अब यहाँ हमें इस करंट की डायरेक्शन को देखना है कि जो इस मेटालिक रिंग में प्रोड्यूस होगा. तो इसके लिए आपको लेंस लॉ याद होना चाहिए. And according to Lenz's law, direction of induced current is always such that it opposes the cause that produced it. तो यहाँ cause क्या है? Cause उस metallic ring का downward fall करना है. This is the cause. तो इसको कैसे oppose किया जा सकता है? इस metallic ring की motion को oppose कैसे किया जा सकता है? So this is possible only when the face of ring towards the magnet acts as north pole. कि जब रिंग का बॉटम एंड जो है, ये बॉटम फेस जो है, अगर यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो जाए और इसकी अपर साइड पर साउथ क्रिएट हो जाए लाइक दिस, कि लोअर सरफेस पे नॉर्थ, दिस इज द फेस विच इज टुवर्ड्स द मैग्नेट. अगर यहाँ नॉर्थ हो, अपर एंड पे साउथ हो, तो आप जानते हैं नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सिव फोर्स होगी. तो रिंग डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, जबकि करंट इंड्यूस होने के बाद नॉर्थ पोल क्रिएट करके मोशन को अपोज करना शुरू कर देगा. जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि लोअर फेस नॉर्थ है, अपर फेस साउथ है, तो फिर आप राइट हैंड रूल की हेल्प ले सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल हमें क्या करना है कि हमें थंब को नॉर्थ साइड पे प्लेस करना है. और यहाँ आप नोट करेंगे कि नॉर्थ इज एट द लोअर फेस, तो थंब डाउनवर्ड, और आपकी जो फिंगर्स होंगी दे विल रोटेट क्लॉकवाइज अलोंग द रिंग. तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो करंट इंड्यूस होगा दैट इज एक्चुअली क्लॉकवाइज. क्वेश्चन नंबर 4. What is the direction of current through resistance R when switch S is closed and when switch S is open? आप देख सकते हो कि यहाँ दो कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है. जो स्विच है वो प्राइमरी के साथ कनेक्ट है और जो रेजिस्टेंस R है वो सेकेंडरी सर्किट में मौजूद है. तो इस स्विच के ओपन या क्लोज होने पर रेजिस्टेंस R में करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको आपने डिस्क्राइब करना है. सो हियर जब आप स्विच S को क्लोज करते हैं, सो ऑन क्लोजिंग द स्विच S, current increases from 0 to its maximum in the first coil which is primary coil. यहाँ current 0 से maximum की तरफ जाएगा, and due to change in current EMF induces in the secondary. And according to Lenz's law, if current in the primary coil is clockwise from positive to negative, then in secondary it would be anti-clockwise. और अगर रेजिस्टेंस R में आप इसकी बात करेंगे, so it is flowing from its left side to the right side. So this would be the direction of current induces in the secondary coil when switch S is closed in the primary coil. But when switch S is opened in the primary, जब आप S को ओपन करेंगे तो ओपन करने से यहाँ करंट डिक्रीज होगा और फ्लक्स डिक्रीज होने लगेगा. और आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इसने हमेशा अपोज करना है. तो यहाँ फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए इस सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है. और रिवर्स डायरेक्शन क्या बनेगी कि नो करंट विल फ्लो फ्रॉम इट्स राइट साइड टू द लेफ्ट साइड. सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट in the secondary coil when switch S is open. So in both cases current will flow in reverse direction. Question number 5, which is very important question. Does the induced EMF always act to decrease the magnetic flux through a circuit? क्या induced EMF हमेशा magnetic flux को decrease करने की कोशिश करेगी? तो यहाँ आपने आंसर में लिखना है no. ये हमेशा डिक्रीज नहीं करती, बल्कि फैराडेज लॉ के मुताबिक इट ऑलवेज अपोजिस द कॉज. तो डिक्रीज और अपोजिस में डिफरेंस है. अपोजिस मींस कि whenever flux is increasing it acts to decrease, and whenever flux is decreasing it will act to increase. यानी इसने हमेशा अपोज करना है, सिर्फ डिक्रीज नहीं करना बल्कि ये अपोज करेगा. समटाइम्स इट विल एक्ट टू इंक्रीज एंड समटाइम्स इट विल एक्ट टू डिक्रीज. Question 6 and 7 they are not included in your smart syllabus. So question number 8, how would you position
a flat loop of wire in a changing magnetic field so that there is no EMF induced in the loop. कि एक flat loop of wire को एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज हो रही है उसमें किस पोजीशन में रखा जाए कि इस फ्लैट लूप ऑफ वायर में ईएमएफ इंड्यूस ना होने पाए, मतलब कि फ्लक्स में चेंज ना आने पाए। तो इसके लिए आप ये अरेंजमेंट यूज कर सकते हो कि इफ इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड then there will be no EMF induced in the loop. For example, this is the loop of wire and it is held parallel to those field lines. So some of the lines are passing above the loop of wire, some of passing are below the surface. So none of the line will pass through that loop of wire. इसमें से कोई एक लाइन भी पास नहीं होगी, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, चाहे फील्ड में चेंज ही क्यों ना आ रही हो, चाहे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज या डिक्रीज ही क्यों ना हो रही हो. सो इन दिस ओरिएंटेशन कोई भी लाइन उस लूप ऑफ वायर में से पास नहीं होगी, कुछ ऊपर से और कुछ उसके नीचे से पास हो जाएंगी. सो देयर वुड बी नो चेंज इन फ्लक्स, यानी डेल्टा फाई जीरो है तो ईएमएफ भी जीरो के बराबर होगी. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. Now, question number 9. In a certain region, the Earth's magnetic field points vertically downward. आप जानते हैं कि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है और एक स्पेसिफिक रीजन में इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउन है. सो व्हेन अ प्लेन फ्लाइज ड्यू नॉर्थ, कि अगर एक प्लेन नॉर्थ साइड पर फ्लाई कर रहा है तो उसका कौन से वाला विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी ईस्ट विंग टिप और वेस्ट विंग टिप, इनमें से कौन से वाला विंग टिप पॉजिटिवली चार्ज होगा. सो दिस इज द अरेंजमेंट. दीज आर डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड हियर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन. यहां हम ये क्रॉस के जरिए इसको शो कर रहे हैं, विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली इनटू द प्लेन, डाउनवर्ड और इनटू द प्लेन, एंड प्लेन इज फ्लाइंग ड्यू नॉर्थ. जो प्लेन है ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी. सो दीज आर टू विंग्स ऑफ दिस प्लेन, ईस्ट विंग टिप एंड वेस्ट विंग टिप. तो कौन से वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा उसको हमें डिस्कस करना है. तो पहले तो ये कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से क्या मुराद है यहाँ पर. सो व्हेन प्लेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ इन अ रीजन, there is a uniform magnetic field which is present vertically downward. So direction of motion of plane and the field lines, they are perpendicular to each other. Hence, the charge which appears on the wing will experience this magnetic force Q into V cross V. And according to right hand rule, the force is directed towards west. इसमें फोर्स को आप कैसे डिटरमिन करेंगे, इसकी डायरेक्शन को, इसके लिए आपने राइट हैंड रूल की हेल्प से v को b की तरफ रोटेट करना होगा थ्रू स्मॉलर एंगल. सो विद द हेल्प ऑफ कर्ल फिंगर्स, फिंगर्स आर इनिशियली ड्यू नॉर्थ, आप इसको डाउनवर्ड रोटेट करेंगे टुवर्ड्स द फील्ड, तो आपका जो थंब होगा वो वेस्ट साइड पर अपीयर होगा. लिहाजा जो वेस्ट विंग टिप है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. क्वेश्चन नंबर 10. Show that E and delta phi over delta T, they have same units. यहाँ E induced EMF है, delta phi over delta T ये rate of change of flux है और आपने prove करना है कि they have same unit. So here is the unit of E, epsilon, which is volt, and it is also equal to joule per coulomb. Whereas the unit of delta phi over delta T is Weber per second. Weber per second, and we know that 1 Weber is equal to Newton meter per ampere over second. ये जो per ampere है इसको आप यहाँ डिनोमिनेटर में भी शिफ्ट कर सकते हैं. So it becomes Newton meter ampere second, and we know that 1 Newton meter is equal to 1 joule and ampere second is equal to coulomb. So the unit of induced EMF, which is joule per coulomb, is also equal to the unit of delta phi over delta T, which is joule per coulomb. So left hand side is equal to right hand side. Hence we can say that they have same unit. तो इसमें आपने प्रूव करना था कि इनकी यूनिट्स क्या हैं, और ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 15 के लिहाज से. एंड द लास्ट क्वेश्चन
which is included in the syllabus. So is it possible to change both the area of loop and the magnetic field passing through that loop and still not have an induced EMF in the loop? क्या ऐसा मुमकिन है कि लूप का एरिया भी चेंज हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज लाई जा रही हो और उसके बावजूद ईएमएफ इंड्यूस ना हो? यानी दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, एरिया भी, मैग्नेटिक फील्ड भी, और इसके बावजूद ईएमएफ इंड्यूस ना हो. सो यस, इट इज पॉसिबल. ऐसा मुमकिन है. और ये कैसे मुमकिन है कि E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी अकॉर्डिंग टू Faraday's law. And here delta phi is the product of B and A. Phi is the magnetic flux and it is product of B and A. For small change, delta phi can also be written as delta B into delta A. So according to the situation, if magnetic field and area both are changing, दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, लेकिन अगर ये चेंज इस अंदाज से हो कि इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे, फाई की वैल्यू सेम रहे, अगर बी बढ़ता है तो ए कम हो जाए और अगर बी कम हो रहा है तो ए बढ़ जाए, जिससे इनकी प्रोडक्ट सेम रहेगी, फाई की वैल्यू सेम रहेगी. सो इफ फाई इज कांस्टेंट देन वी कैन से दैट डेल्टा फाई इज जीरो, देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स, सो ईएमएफ विल नॉट इंड्यूस. So this is the condition कि when B and A they are changing in such a way, यानी दोनों में इस तरह चेंज लाई जाए कि इनकी प्रोडक्ट पे फर्क ना पड़ रहा हो, तो फिर EMF इंड्यूस नहीं हो सकती. तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस. नाउ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 15. So here is the first numerical. An EMF of 0.45 volt is induced between the ends of a metal bar moving through a magnetic field of 0.22 Tesla. So what field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that all other factors remain the same? यानी यहाँ दो आपको different situations बताई गई हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड 0.22 टेस्ला है तो EMF 0.45 वोल्ट है. अगर हम EMF बढ़ाकर 1.5 वोल्ट करना चाहते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी रिक्वायर्ड होगी? सो दिस इज द गिवन डाटा. आपको इनिशियल EMF मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, फाइनल EMF गिवन है, बट फाइनल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है. फॉर दिस पर्पस वी नो दैट according to motional EMF, E is equal to VBL sin theta. इसमें सिवाय EMF और मैग्नेटिक फील्ड के बाकी तमाम फैक्टर्स कांस्टेंट है. Similarly, for the second equation, so if we compare both equations or if we divide equation 1 with equation number 2, it becomes epsilon 1 over epsilon 2 is equal to B1 over B2 और हमें फाइनल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है. So by putting the values, the magnetic field is equal to 0.73 Tesla. So this is the required magnetic field to produce the EMF equal to 1.5 volt. यानी इतनी EMF पैदा करने के लिए आपको ये magnetic field provide करनी पड़ेगी, which is equal to 0.73 Tesla. Numerical number 2. The flux density in a given region between the pole faces of a horseshoe magnet is 0.5 Weber per meter square. This is the strength of magnetic field. Vertically downward. Find the EMF induced in a straight wire. There is a straight wire whose length is 5 centimeter. ये वायर की लेंथ होगी. And it is perpendicular to B. यानी ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी गई है. When it is moved in a direction at an angle of 60 degree. जब ये 60 डिग्री एंगल पर मूव करेगी विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, देन फाइंड द EMF इंड्यूस्ड. ये अरेंजमेंट है कि इनिशियली वायर यहां पर थी और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है. सो इफ दिस वायर इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये है एंगल विद हॉरिजॉन्टल दैट इज 60 डिग्री,
और एंगल विद वर्टिकल या एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड वो बनेगा आपके पास 30 डिग्री विच इज 90 minus 60. So EMF VBL sin theta by putting all the values, the EMF induced is 1.25 10 is power minus 2 volt. So this is the value of induced EMF by moving the wire at an angle of 60 degree with horizontal. Question number 3. A square coil of wire which has 10 loops, ये उसके number of turns है, and the area of each loop is 1.5 10 is power minus 3 meter square is also given. If magnetic field is perpendicular to the surface of each loop, in numericals में आपने एंगल का ख्याल रखना है. अब यहाँ बताया जा रहा है कि magnetic field is perpendicular to the surface of each loop. ये magnetic field surface के perpendicular है, लेकिन vector area के parallel होगी. So if field is changing from 0.05 to 0.06 in 0.1 second, then find the average EMF induced in the coil during this time. So according to given data, number of turns 10, initial magnetic field 0.05, final magnetic field 0.06, change in magnetic field 0.01, area of each loop वो भी गिवन है, आपको टाइम इंटरवल भी बताया गया जिस दौरान ये फील्ड में चेंज आ रही है. तो EMF इंड्यूस आपने फाइंड करनी है. EMF is equal to N delta phi over delta T, and delta phi can be written as delta B into delta A cos 0. यहाँ याद रखना है कि वर्ड परपेंडिकुलर यूज हो रहा था, लेकिन ये एंगल है बिटवीन सरफेस एंड फील्ड, और हमें एंगल यूज करना है बिटवीन एरिया एंड द फील्ड. So that is 0 degree. So by putting all the values, EMF induced would be 1.5 millivolt. So this is the value of induced EMF. Question number 4. A circular coil has 15 turns and having radius 2 centimeter each. The plane of the coil lies at 40 degree to a uniform magnetic field. यहाँ फिर आप ये याद रखेंगे कि plane of the coil की बात की जा रही है. And this plane of coil lies at 40 degree to the uniform magnetic field जो कि 0.2 टेस्ला थी. अगर फील्ड को इंक्रीज कर दिया जाए by 0.5 Tesla in 0.2 seconds, then find the magnitude of induced EMF. So number of turns, they are 15. Initial field, यहाँ पर ये 0.2 टेस्ला इनिशियल होगी, 0.5 टेस्ला फाइनल होगी. So final minus initial, it would be 0.3 टेस्ला, radius 2 centimeter, delta T 0.2, angle between plane of coil and the field is 40, but angle between magnetic field and vector area ये आप फाइंड करेंगे 90 minus 40 degree से, and it would be 50 degree. So EMF is again by using the same mathematical form, delta B delta A cos 50 over delta T. Here delta A इसको आप लिखेंगे pi r square, delta A pi r square because radius is given. तो रेडियस के लिहाज से आप एरिया को पाई आर स्क्वायर लिखेंगे because this is circular coil. So by putting all the values, final EMF is 1.8 into 10 is power minus 2 volt. तो ये आपके पास इसकी EMF होगी जो आपने फाइंड करनी थी in question number 4. Question number 5. Two coils and they are placed side by side, दोनों एक दूसरे के करीब पड़ी हैं. An EMF of 0.8 volt is obtained in one coil. दोनों में से एक में 0.8 volt EMF induce हो रही. When the current is changing at the rate of 200 amperes per second in the nearby coil, so find the mutual inductance of these two coils. So given data, EMF in secondary 0.8, rate of change of current in primary 200 amperes per second. So mutual inductance can be determined by using this equation. ES is equal to M delta IP over delta T, where M becomes equal to ratio of EMF induced in secondary to the rate of change of current in primary. Hence,
mutual inductance is about 4 millihenry. 4 millihenry. Question number 7. 6 is not included in your smart syllabus. So 15.7. A solenoid having 250 turns and its self-inductance is 2.4 millihenry. So what is the flux through each turn when current is 2 एम्पेयर के अगर उस कॉइल में 2 एम्पेयर करंट पास हो रहा है तो फिर हर टर्न में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी and what is the induced EMF when current changes at the rate of 20 amperes per second. So number of turns are 250, self-inductance 2.4 millihenry, current 2 ampere, rate of change of current 20 amperes per second, find the flux through each turn and EMF induced. N phi is equal to Li. ये इक्वेशन हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में ड्राइव की है where phi becomes equal to Li over N. So by putting the values of each factor, self-inductance, current, number of turns, this would be the flux in Weber. And EMF, which is also called self-induced EMF, L delta I over delta T. L, which is given 2.4 millihenry, whereas current, rate of change of current is also given 20 amperes per second. So EMF induced is 48 millivolt. Question number 8. A solenoid having length 8 centimeter and cross-sectional area half centimeter square has 520 turns. Find the self-inductance of the solenoid when the core is air. If current in solenoid increases through 1.5 ampere in 0.2 seconds, find the magnitude of induced EMF in it. Solenoid की लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर्स में चेंज करेंगे, करंट चेंजेस 1.5 एम्पियर in time 0.2, find the self inductance and EMF induced. Self inductance is mu naught n square AL. So mu naught n over L, where small n is replaced by n over L whole square into AL. ये number over turns per unit length से आपने replace करना था. So by putting the values, this self inductance becomes, यहाँ mu naught की वैल्यू आपने याद रखनी है, it is permeability of free space and its value is 4 pi 10⁻⁻7 Weber per ampere per meter. This is the value of mu naught, permeability of free space. So this would be the self inductance 2.12 10⁻⁻4 Henry. Now self induced EMF L delta I over delta T. This is self-inductance and the rate of change of current delta I over delta T. So induced EMF is 1.6 10⁻³ volt. So let me discuss next numerical 15.10. So like any field, the Earth's magnetic field stores energy. जिस तरह दूसरी magnetic field energy को store करती हैं, इसी तरह Earth की magnetic field भी energy को store करने की सलाहियत रखती है. So in a given region, the strength of Earth's field is 7 into 10⁻⁵ Tesla. The space occupies that area and has height 750 meter, यानी एक cylindrical portion है, उसका area भी height भी given है. तो इस region में कितनी energy store हो सकती है, उस stored amount of energy को calculate करना है. Strength of magnetic field in that region given, area of that region given, height is also given. Find the amount of energy stored in that region. So U, which is equal to 1/2 B square over mu naught into AH. B square over mu naught into AH, where B square is given and the value of mu naught is again 4 pi 10⁻⁷ area into height.
So amount of energy stored in the given region of space is 1.46 10 is per 9 joule. So this is the amount of energy stored in that given region of space. Question number 11. A square coil of side 16 सेंटीमीटर, ये एक स्क्वायर कॉइल है जिसकी हर साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, and number of turns 200, rotates in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 Tesla. If peak EMF is 12 volt, so find the angular velocity of the coil. तो ये जनरेटर से रिलेटेड है न्यूमेरिकल, जिसमें कॉइल का एरिया आप 16 इंटू 16, क्योंकि हर साइड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है, सो इट बिकम्स 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, इट बिकम्स 0.0256 मीटर स्क्वायर. एंड नंबर ऑफ टर्न्स दे आर 200, strength of magnetic field 0.05 Tesla, or peak value of EMF, this is 12 volt. Find the angular velocity, and we know that E naught is equal to n omega AB. From here, omega becomes equal to E naught over NAB. By putting the values, angular velocity of that coil required for this purpose is 47 radian per second. This is the angular velocity of the coil, 47 radian per second. Second last, a copper ring having radius 4 centimeter, resistance 1 milliohm. A magnetic field is applied over the ring perpendicular to its plane. If magnetic field increases from 0.2 to 0.4 in this time interval, so what is the current in the ring during this interval? कि एक कॉपर रिंग है, उसका रेडियस भी गिवन है, उसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें से पास हो रही है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 0.2 to 0.4 टेस्ला. सो फाइंड द टाइम इंटरवल. सो हियर इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2, फाइनल इज 0.4, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला. यहाँ कॉपर रिंग की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 यूज करेंगे रिंग की वजह से, जबकि इस रिंग का रेडियस 4 सेंटीमीटर, टाइम इंटरवल भी गिवन है, रेजिस्टेंस 1 मिली ओहम विच कैन आल्सो बी रिटन एज 0.001 ओहम. और आपने इसमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द करंट, लेकिन करंट को फाइंड करने के लिए पहले हमें ईएमएफ भी रिक्वायर्ड होगी. सो हियर E इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. सो n डेल्टा B डेल्टा A, और यहां फिर cos 0 डिग्री यूज करना पड़ रहा है because magnetic field is perpendicular to plane. It is not perpendicular to magnetic field, it is perpendicular to plane. तो लिहाजा आपने याद रखना है कि यहाँ एंगल हमें यूज करना होता है between area and the field, and that would be 0 डिग्री, और एरिया को आप पाई r स्क्वायर के साथ भी रिप्लेस करेंगे. So this is the value of EMF induced in that ring. So the current can be determined as E over R. Induced EMF 0.201, resistance 0.001. So this it would be the required answer, that is 201 ampere. So this amount of current will induce in that copper ring when magnetic field increases from 0.2 Tesla to 0.4 Tesla. The last numerical, a coil of 10 turns and area 35 centimeter square in a perpendicular magnetic field 0.5 Tesla. The coil is pulled out of the field in 1 second. 1 सेकंड में कॉइल को वहां से पुल आउट किया जाता है. तो इसके रिजल्ट में इंड्यूस होने वाली ईएमएफ को मेजर करें. सो हियर नंबर ऑफ टर्न्स आर 10, चेंज इन फील्ड 0.5, एरिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, in time interval 1 second. So find the EMF induced again by using n delta phi over delta t, where delta phi is delta B into delta A. By putting their values, EMF is 1.75 10 per minus 2 volt. So this would be the this is the last numerical of chapter number 15 according to smart syllabus. Thank you.